Okay, so the first thing is that I don't know if most of you all know what IELTS basically is, but basically IELTS is the full form of IELTS is International English Language Testing System, and it is a test that is required for. Uh, is there a problem? Okay, so this is basically a test given by people who want to shift to abroad, like any country, for example, UK, USA, or anywhere in the world. But this test is basically for those who this test is basically based on two types, like academic and general. And I really hope that all of you, once you guys enter our institute, you guys will be able to solve this test really easily and gonna learn a lot of new things. So the course that we are doing right now is basically for those who want to apply outside of the country, as well as people who want to improve their English, even if they're not willing, or even if they do not want to give test, that is basically the test to go to abroad, but you still want to learn English and improve it. You guys are welcome to join our classes, because we will be covering four different type of modules in our lecture. And I'm really sorry for repeating stuff because I'm not really feeling well, so I really hope you guys pardon what I'm speaking right now. Okay, so the type of IELTS, they're different. There are two type of IELTS, that's academic and journal. Academic one is given by students who are who want to like study for schools, colleges, and universities, while the general IELTS is taken by people who want to apply for jobs, or maybe as housewives or families. So this is a table that shows the bands that IELTS have, and there are total 9 bands, and most of the academic students are supposed to like get 7+ band for you know better opportunities. So this course is going to help you in that. Okay, so IELTS is basically based upon four different sections that includes listening, reading, writing, and speaking. So let's just discuss all of the four types of modules included in this course, and let's also discuss how they're like how they basically come in the paper. So I'm going to show you some sample tests, like sample question papers, as well as I'm going to explain you a bit. Okay, so the reading section. The reading section is basically, you know, in this course about the reading section, I'm going to give you tips about how the reading section basically you solve the reading section. I'm going to give you tips on how to solve it in time, because most of the students really have a problem in time management. IELTS is basically based on time management. It's all about time management, और अगर आपसे time manage नहीं होगा तो you end up losing a lot of marks, और ऐसा बहुत cases में हो चुका है. When I went to give my test, I saw a lot of people struggling with it. ठीक है, तो time management is one of the most important factors that we are inshallah going to practice in this module. उसके अलावा I'm gonna our course will be based on practical basis, और इसके अंदर हमारे frequent tests होंगे. वीक के अंदर we'll be having like 4 classes, तो हम इंशाल्लाह every day 2 modules practice करते हैं. This is my second batch, so my first batch alhamdulillah was very successful, and a student ended up attaining 7+ bands, and I'm very grateful for that. And inshallah I really hope कि this batch, if you guys join it, तो you आपकी आवाज कट रही है। ज़्यादा आपकी कट रही तरफ है. से इज इंटरनेट इशू नहीं, क्लियर है, कंटिन्यू रखें। ओके श्योर. स्टूडेंट आपकी तरफ से इशू होगा। ओके, अब हम आइट्स के सेक्शन में बेसिकली हम लोग प्रैक्टिसेस करेंगे. आई विल लाइक रीड द पैसेजेस विद यू गाइज, एंड आई विल टेल यू हाउ टू बेसिक टिप्स जितनी भी हैं हमारे पास रीडिंग की, वो आई विल शेयर इट विद यू गाइज. फॉर एग्जांपल, अब आपके पास रीडिंग सेक्शन के अंदर जो
होता है। क्वेश्चंस वो इस टाइप के आते हैं कि आपके पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पैराग्राफ्स दिए होते हैं और उनके अंदर से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं और उसके अंदर भी आगे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल वन ऑफ इट इज़ हेयर, आई विल जस्ट शो यू जस्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. जैसे कि आपको पैसेज दिया हुआ होगा और उसके अंदर से आपने जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स करने होंगे, ठीक है. और इस तरह के 12 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो यू गाइज नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. और रीडिंग एज एन, अगर आपने नहीं भी टेस्ट देना तो रीडिंग जो बेसिकली मॉड्यूल है ये आपका फोकस रियल लाइफ में बहुत बढ़ाती है. बिकॉज इन द रेगुलर डेज हम लोग फ़ोन्स के आदी हो चुके हुए हैं. लाइक शॉर्ट कंटेंट, हमारा फोकस स्पैन बहुत ख़राब हो चुका हुआ है. तो उसके अंदर जो है ना, जिस तरह हम लोगों ने अब रीडिंग स्टोर दी हुई है, वी बेयरली सी पीपल रीडिंग नाउ डेज. पहले हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, बुक्स पढ़ते थे एंड ऑल. बट अब since we are living in this social media world now and our attention spans have gone bad, तो उसके अंदर रीडिंग सेक्शन में आपको इन जनरल इन लाइफ में भी आपको अपना फोकस करने का तरीका जो है ना, इट्स गोना बिकम रियली बेटर. इसके बाद वी हैव अ राइटिंग सेक्शन. अब दोनों जो एकेडमिक आइट्स, अच्छा जो रीडिंग सेक्शन है, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग कि रीडिंग सेक्शन इज़ बेसिकली द सेम फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स एंड जर्नल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता. और जो रीडिंग के पैसेजेस आते हैं वो रियल टाइम आर्टिकल्स से लिए होते हैं, यानी कि बुक्स से, मैगजीन से. सो दैट इज़ व्हाट दे कम फ्रॉम. एंड आई विल इंशाल्लाह डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल विद यू गाइज वंस द कोर्सेज हैव स्टार्टेड. उसके बाद हमारे पास है राइटिंग सेक्शन. अब राइटिंग सेक्शन जो है उसके अंदर भी 2 टास्क होते हैं. रीडिंग में हमारे पास 3 टास्क होते हैं, राइटिंग में हमारे पास 2 टास्क होते हैं. और एकेडमिक और जनरल में इसमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है. टास्क 2 जो है वो सबके लिए सेम होता है. इट्स बेसिकली एन ऐसे राइटिंग, ठीक है. और जो टास्क 1 है उसके अंदर बेसिकली इट्स लाइक आपने जनरल में यू हैव टू राइट अ लेटर, और एकेडमिक में देर इज़ दिस टॉपिक, वो थोड़े से उसके अंदर यानी कि पाई चार्ट्स हैं, चार्ट्स बने होते हैं, एंड दैट यू गाइज हैव टू सॉल्व इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है. तो वो भी इंशाल्लाह वी गोना कवर दैट. तो राइटिंग जिन्होंने अप्लाई करना है उनको तो ज़रूरी है. जिन्होंने नहीं अप्लाई करना उनकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो सकती हैं. वो अपनी इंग्लिश बढ़ा सकते हैं, वो अपनी वोकेबलरी बढ़ा सकते हैं, और वो अपनी इन जनरल अपनी जो राइटिंग है और इंग्लिश है उसको बेटर कर सकते हैं. सो इवन इफ़ यू आर नॉट applying, this is a really great opportunity to improve your English skills, because I will be teaching you guys the basic vocabularies, basic tenses. हर चीज़ हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, ठीक है. तो इसके अंदर भी वी विल गिव यू द टिप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, स्ट्रक्चरिंग एसेज, बिकॉज A to Z, because in order to attain good bands you need a lot of tips, and this course is going to cover that all for you inshallah. अब दिस इज सैम्पल टेस्ट, और इसके अंदर जैसे अब पार्ट 2 जो होता है इट्स जस्ट अबाउट sorry, so the part 2 is just about writing an essay, and I will make sure you guys practice that enough. And part 1 में आपको इस तरह के pie charts आते हैं, and then you have to like write on it, on these pie charts. So yes, of course you will be studying this as well. उसके बाद आ जाते हैं listening section. Again one of the प्राइमरी सेक्शंस, जिसमें आप जो है हम इंग्लिश बोलना भी सीख लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि व्हेन समवन इज़ सेइंग समथिंग हमें समझ नहीं आता. सो लिसनिंग सेक्शन इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट एज वेल. तो अगेन इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनीवेयर, यू स्टिल नीडेड समवेयर टू मेक योर इंग्लिश बेटर. बिकॉज अगर कोई आपसे किसी एक्सेंट में बात करें एंड यू डोंट गेट इट, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यू हैविंग टू अंडरस्टैंड इंग्लिश. सो यू गाइज नीड दिस इज़ वेल. और ये चारों जो मॉड्यूल्स बेसिकली कंबाइन होते हैं ना, तो दे बेसिकली मेक अ पार्ट, दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी राइटिंग भी अच्छी है, आप बोलने में अच्छे हो, आप सुनने में अच्छे हो, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, एंड दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. अप्लाई करना ना करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इट एज ए लैंग्वेज इज़ अ डिफरेंट थिंग. अब लिसनिंग के अंदर ये होता है कि दे आर गोइंग टू प्ले 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग्स, जो आपको हेडफोन्स देते हैं एंड देन वो आपको रिकॉर्डिंग प्ले करवाते हैं. एंड उसमें भी जिस तरह आपके पीछे फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चंस दिखाए थे, इसी तरह वो भी आपके पास एक क्वेश्चन शीट होती है और उसके ऊपर आपने सॉल्व करने होते हैं. तो अगैन आई विल बी प्लेइंग रिकॉर्डिंग्स फॉर यू एंड वी गोना डू इट ऑल इन रियल टाइम.
उसके बाद हमारे पास लास्ट सेक्शन है, दैट इज़ बेसिकली स्पीकिंग. और स्पीकिंग तो यू नो इट्स इम्पॉर्टेंट. स्पीकिंग अब फॉर द पीपल, इसका भी जनरल एकेडमिक्स सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है. जनरल एकेडमिक में सिर्फ राइटिंग सेक्शन के अंदर डिफरेंस है, और वो सिर्फ ये है कि उसमें आपने लेटर लिखना होता है और इसमें आपने लेटर नहीं लिखना होता है, आपको एक पाई चार्ट को डिस्क्राइब करना होता है. द रेस्ट इज़ सेम फॉर ऑल ऑफ़ यू. और जो राइटिंग स्पीकिंग सेक्शन है बेसिकली उसके अंदर वी हैव 3 पार्ट्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू. आगे तीनों सैम्पल टेस्ट में आपको दिखाती हूँ, सो इट्स ईजी फॉर यू. तो स्पीकिंग तो खैर अगैन वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ English. If you know how to speak English properly, that again becomes a part of your personality. Okay, so basically the speaking test is based on 1, 2 and 3 different parts. 1 जो सेक्शन है उसके अंदर बस आपको 2-3 सेंटेंसेस में आंसर करना होता है. देयर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस के सॉरी ओके इसमें आपको ये बताना होता है अपना, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं ना, आपको बेसिक चीज़ें, आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आपको शॉपिंग अच्छी लगती है, आपको खाना अच्छा लगता है. दैट्स इट. दिस इज़ व्हाट दे आस्क यू. बट इन part 2 they will give you like they give you 1 minute to prepare for a topic. जिस तरह ऐसे होता है, बट ऐसे यू नो इज़ अ लॉन्ग थिंग, बट दे गिव यू 1 minute टू प्रिपेयर फॉर अ टॉपिक एंड यू हैव टू स्पीक फॉर ऑन इट फॉर 2 minutes. तो उसके अंदर जो भी आपका टॉपिक होता है आप लिखते हो उसको 1 मिनट में जल्दी से अपने दिमाग में पॉइंट्स बनाते हो. सो दिस बेसिकली टेल्स कि आप कितने क्विक हो, आप कितने जल्दी चीज़ों पे फोकस करके आप कितने अच्छे तरीके से जो है ना चीज़ों को कॉम्प्रहेंड करते हो और उसको सीखते हो और आगे जल्दी से उसको कन्वे करते हो. सो अगेन दिस टेस्ट यू. और लास्ट वाला जो है बेसिकली वो सम वट आपके पार्ट 2 से रिलेटेड होता है. समटाइम्स होता है, समटाइम्स नहीं होता. और उसके अंदर जो है वो आप बताते हो कि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं. बट ये जो पार्ट 3 है दिस इज़ द बेस ऑफ योर आइट्स का बैंड इन स्पीकिंग. अगर आपका पार्ट 3 अच्छा है, क्योंकि पार्ट 1 बहुत ईजी होता है, बेसिक येस नो क्वेश्चन होते हैं और आधा क्वेश्चन वही होता है, आधा आंसर वही होता है जो क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो वो इट्स ईजी, वो सब कर लेते हैं. पार्ट 2 भी मोस्ट ऑफ द किड्स, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बेसिक होते हैं तो वो भी बच्चे कर लेते हैं. बट पार्ट 3 दिस इज़ व्हाट मेक्स योर बैंड और ब्रेक्स योर बैंड. अगर आप कॉम्प्लेक्स आंसर्स, क्रिटिकल थिंकिंग वाले आंसर्स प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर वोकैबुलरी के साथ दे दोगे तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट मेक्स योर बैंड. तो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करना है और जिनको अच्छे बैंड्स चाहिए, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. एंड ऑल ऑफ द टॉपिक्स जिनको जो मैंने अपने बच्चों को बैच 1 में पढ़ाए थे, एग्जैक्टली वही टॉपिक्स उन लोगों को आगे एग्ज़ाम्स में आए थे. सो I have a lot of, I know a lot of things about it, so I really hope that you guys join it. ताकि we can learn a lot. This is going to, in general, make your knowledge and skills better. Okay, so coming to the most important part, we have a scholarship test that will be held on November 26th. That is Sunday, and it will begin at 2 p.m. एंड उसके अंदर इफ़ यू गाइज आर बेसिकली, हम लोग टेस्ट तो बहुत ज़्यादा उस तरह डिफ़िकल्ट नहीं होगा. वी विल बी एवेल्यूएटिंग यू गाइज बेस्ड ऑन द ओरल टेस्ट, जो कि आई विल बी टेकिंग एन ओरल टेस्ट फ्रॉम यू गाइज. और वो 45% आपकी स्कॉलरशिप के ऊपर जो है ना बेस करेगी उसकी वेटेज. एंड द नेक्स्ट इज़ अ राइटिंग टेस्ट जिसके अंदर वी विल बी गिविंग यू गाइज एन एसे, एंड आपको ऐसे लिखना होगा. एंड द नेक्स्ट इज़ प्रीवियस एकेडमिक कैरियर. ठीक है, तो उसके अंदर द एकेडमिक करियर इज हैज़ लेस वेटेज, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट इफ़ यू परफॉर्म रियली वेल ऑन द first 2 categories, you will be attaining a scholarship from between 10 to 25%. So make sure you do not miss the test on, that is on 26th November, Sunday. And if a lot of you will be willing, तो हम लोग टाइम आगे पीछे कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम बच्चे आएँ टेस्ट में. सो आई रियली होप, अगर आई रियली वांट कि अगर किसी ने भी कोई चेंजेस करवानी है टाइम में, ताकि जिस टाइम पे सब कंफर्टेबल है तो हम लोग उस टाइम पे टेस्ट रख लें. एंड द रेस्ट इज़ के जो कोर्स डिटेल्स हैं, मेन चीज़ वो ये है कि कोर्स जो है हमारा 2 months का है. ठीक है, और 4 days क्लासेस होंगी वाया गूगल मीट. इसी तरह से क्लासेस होंगी ऑनलाइन हमारी, और स्टार्टिंग डेट इज़ 4th of December 2023.
और लेक्चर टाइमिंग्स बेसिकली 7:15 to 9:15 अभी के लिए हैं, बट अगेन जितने बच्चे इनरोल करेंगे और वो बताएंगे कि वो किस टाइम पे फीजिबल हैं, बट एट नाइट टाइम तब ही हम लोग क्लासेस रखेंगे. सो ऑल ऑफ दिस इज़ लाइक negotiable and changeable depending upon you guys. And the fees is 11,999. And अगर आप कंपनी अगर आप 12,000 फीस है और 250 रुपये रजिस्ट्रेशन फी. Hello, excuse me. yes, you guys are Here, open. I have a question. Yes, yes, sure. Excuse me, I have a question. Yes, please ask. Like I am a beginner. I am